Now, in this video, I am going to discuss error analysis. In previous video, already I have discussed about the fundamental quantities, fundamental units, definition of fundamental units, derived units, and how can we obtain the derived units here. I think maybe in the measurement it is enough. And also, if you will look your book, then there is also given the some direct and indirect method for measuring the length, for measuring the mass, for measuring the time. So you can read from your book here what is the direct and indirect method for measuring length, mass, and time here. Now come on this error analysis. This topic is very important here, and I want to tell you this one. Error, error is what here? It means the mistakes which is taken during an experiment, or the fault, or the drawbacks which comes in your experiment during the experiment is called what here? Error. But in this error, two things is very important. First one is what here? Accuracy, and second one is precision. But before I start this, I want to tell you the two things. First one is true value. True or actual value. True value is also called actual value, and one is your observed value. True value means the actual value of any reading. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं, जैसे आपने क्लास 9th में कैलकुलेट किया होगा वैल्यू ऑफ जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. So the true value or actual value of acceleration due to gravity, as you know, how much here? 9.8 meter per second square. This is the actual value or the true value of the acceleration due to gravity. और आपने जो रीडिंग लिया उससे कैलकुलेट करने के बाद मान लिया गया 9.6, 9.5, 9.7, ये सब आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू हो गई. तो एक होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक होता है ट्रू वैल्यू. एंड व्हेन योर ऑब्जर्व्ड वैल्यू कम्स वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, then you can say that reading is what here? More accuracy, or possess the more accuracy. So accuracy is simply the extent up to which our observed value is agree with the true value is called accuracy. And precision is what here? Precision means when your observed value are very close to each other, then you can say your reading is highly precise. So precision and accuracy both are different here. A simple example is given here. There are 4 blocks, and I hope maybe all of you familiar with this game. आप सब लोग इस गेम को खेले होंगे. वो बुल्स आई वाला होता है जिसमें सेंटर में बुल्स आई, और उसको क्या करते हैं हम लोग? एरो से या फिर बुलेट से शूट करते हैं. मीन्स योर ट्रू वैल्यू इज दिस वन, and all these are your observed value, means where you will put the shot. जहां जहां आपके शॉट लगते हैं वो आपके क्या है? observed value. और ये बुल्स की आई क्या है? ये है आपका ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू. तो ये रिटन ना, दिस वन इज a bull's eyes and this one is bullet spots. Now you see here, in this case all your observed value means your attempt far from each other, ये खुद एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, and also far from this target means bull's eyes. इसका मतलब ये हो गया कि इसका प्रिसीशन भी लो है. प्रिसीशन लो क्यों है? क्योंकि ये सारे अटेम्प्ट हमारे खुद से बहुत दूर दूर हैं, इसलिए लो प्रिसीशन हो गया. और चूंकि ये बुल्स आई से भी दूर है, इसलिए इसकी एक्यूरेसी भी क्या हो गई? लो हो गई. So in this first diagram you can say it shows low precision and low accuracy. But in this diagram you see all these your attempts, means all your this observed value is very close to each other, and when your observed value is very close to each other, then you can say its precision is very high. But all these are far from this bullseye, it means its accuracy is low. So this is the example of high precision but low accuracy. In third diagram you see
all these close to the target, close to the target. But this attempt is far from this one, this attempt is far from this one, this attempt is far from this one. It means all these attempts are not form a cluster, not very close, but all these attempts are close to the bull's eyes. It means its accuracy is high because all these attempts are close to the bull's eyes. And why low precision? Because all these clusters are from far from each other. जैसे ये इससे बहुत यहाँ से ये दूर हो गया, यहाँ से ये दूर हो गया, यहाँ से ये दूर हो गया, इसका मतलब इसका प्रिसिशन क्या हो गया? लो हो गया. लेकिन क्योंकि सब जो है बुल्स आई के पास दिख रहे हैं, इसलिए इनकी एक्यूरेसी क्या हो गई? हाई हो गई. And last here you see what all these are very close to each other. It means high precision. And also close to the bull's eyes, it means high accuracy. So in this way you can say high accuracy and high precision, how can we find? So accuracy is depends on our observed value is how much it is closer to the actual value or the true value. And precision is what here? How much our calculated value or observed value are close to each other. Now, errors in measurement. When we take any measurement in laboratory, जब हम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं with the help of any instrument, तो उसमें जो भी गलती हो सकती है वो दो तरफ से होगी. Either you are taking the wrong reading, means your observation is fault. This one is called error is taken by the observer. जैसे हम कह दें कि सपोज लेंथ इज मेजर्ड 2.5 सेंटीमीटर एंड एट द प्लेस ऑफ 2.5 बाय मिस्टेक यू आर रीडिंग 2.6. तो ये इंस्ट्रूमेंट की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है. इट मींस फर्स्ट टाइप ऑफ द एरर इज कम्स फ्रॉम योर साइड एंड सेकंड टाइप ऑफ एरर इज ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट. मींस इंस्ट्रूमेंट ही खराब है या इंस्ट्रूमेंट ही इस तरह का है कि जो कि फॉल्टी रिजल्ट दे रहा है. It means when you will take any reading or when you will do any experiment in the laboratory, then the two types of the errors exist. Once from your side, which is what here error in observation, and second one is what here error in instrument here. And you know when we calculate or when we take the reading of any quantity, physical quantity, which involves the other quantity also. It means the accuracy of the first physical quantity is depends on the accuracy of how many other quantity it depends. जैसे हम जानते हैं density. Density is equal to mass upon volume. जैसे हम किसी ब्लॉक की अगर डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम उस ब्लॉक की हम क्या निकाल लेंगे? मास निकाल लें और उसका वॉल्यूम निकाल लें. लेकिन इस डेंसिटी की एक्यूरेसी डिपेंड करेगी कि हमने मास को कितना एक्यूरेट मेजर किया है और वॉल्यूम को कितना एक्यूरेट मेजर किया है. When you will take the accurate value of mass and accurate volume of that body, then you will get the accurate density. But out of these mass and volume, if any one becomes wrong, अगर कोई एक गलत हो जाएगा, जिसका मतलब इस डेंसिटी के कैलकुलेशन में क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी. It means error is totally depends on, or errors in a physical quantity is totally depends on कि how much accuracy and with what accuracy you have taken the other quantity on which it depends. जैसे density इन दोनों पे डिपेंड करता है, मास और वॉल्यूम. हमने बताया कि इस डेंसिटी की एक्यूरेसी डिपेंड करेगी हमने कितना एक्यूरेट मास मेजर किया है, कितना एक्यूरेट वॉल्यूम मेजर किया है. It means in any experiment the measurement of these quantity is involved the two types of error. Now, first is what here? Systematic error. As it is clear, systematic error means this error is constantly occurs in the experiment. And this error is constantly occurs. जैसे हम आपको कहें कि अगर मैं आपको एक वॉल क्लॉक दूं और इस वॉल क्लॉक में हम ये बता दें ये वॉल क्लॉक 1 घंटे फास्ट है
if this wall clock is 1 hour fast. Suppose this wall clock is giving the time 2 o'clock. ये वॉल क्लॉक कितना टाइम दे रहा है? 2 o'clock. इसका मतलब एक्चुअल टाइम क्या है? 1 आवर क्या बताया मैंने? फास्ट है. इसका मतलब एक्चुअल टाइम कितना है? 1 o'clock. Suppose this clock is giving 4 o'clock. इसका मतलब इसका एक्चुअल टाइम 3 o'clock है. इसका मतलब इसमें कॉन्स्टेंटली 1 घंटे की क्या आ रही है? एरर आ रही है. So that error which constantly occurs in an apparatus is called what error here? Systematic error. As it is clear from its name also, systematic error. And this systematic error is also classified in 3 parts. First one is what here? Instrumental error. Second one, error due to imperfection. And third one is what here? Gross error. And under this, what is the instrumental error? Instrumental error is that error which occurs in the instrument. Means already that error is occurs in the instrument. Like sometime in the vernier calipers, you have taken here positive error, negative error, or in screw gauge there is a backlash error. So all these error is already present in the apparatus, and due to this, such type of the apparatus will always give what error? Instrumental error. Second is what here? Error due to imperfection. Error due to imperfection means this error is arises due to unwanted phenomena. जैसे एक्सपेरिमेंट के दौरान जो चीज आप नहीं चाहते हैं, अगर वो चीज भी होती रहे तो उससे भी एरर आएगी. और वो किस में आएगा? एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन. जैसे हम ओम्स लॉ से, जैसे अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस निकाले और उसमें हमने करंट फ्लो कराया, तो करंट फ्लो कराने पे वायर क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा, लिटिल हॉट होगा. और जैसे ही वायर का टेम्परेचर चेंज होगा, तुरंत उसका रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा? चेंज कर जाएगा. इसका मतलब हम नहीं चाहते हैं वायर हॉट हो, लेकिन फिर भी हम रोक नहीं सकते वायर को हॉट होने से. इसका मतलब वायर का हॉट होना हमारे लिए क्या है? अनवांटेड फिनोमेना है. So sometimes the unwanted phenomena which occurs in the experiment, that is called what here? Error due to imperfection. जैसे in the heat experiment, if you want to find out or if you want to avoid all the type of the loss of heat, but you can't be avoid the heat loss due to radiation. Radiation के कारण कुछ न कुछ heat अपने आप loss होना ही होना है. इसका मतलब this one is unwanted phenomena occurs. So all these phenomena which unwanted phenomena which occurs in the practical or experiment, that one is called what? Error due to imperfection. And third part is what here of this error? Gross error. Actually, gross error takes place due to the casual approach of the experiment or casual approach of the practical. And this gross error is also takes what here? Consider fault or mistakes in calculation part, in deduction part, and gross error can be minimized by the careful working. अगर हम सावधानी से काम करेंगे तो ग्रॉस एरर को हम क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं. जैसे हम अपना कैलकुलेशन पार्ट सही कर लें, और फिर जो है देख लें रीडिंग हमने सही लिया है कि नहीं लिया है, तो बाय टेकिंग ऑल दिस प्रिकॉशंस वी कैन अवॉइड द ग्रॉस एरर. Now second one is what here? Random error. And random error arises due to a small change in the condition of the experiment. What I am saying here? A small change in the condition of the experiment. And second one is what here? Incorrect judgment. So these two factors is the cause of the random error. And random error can be minimized. इस random error को हम minimize कर सकते हैं. कैसे? By taking the arithmetic mean or by taking the mean of large number of reading. आप कभी लैब में गए होंगे और वहां जब आप प्रैक्टिकल करते होंगे तो एक ही चीज के लिए ढेर सारी रीडिंग लेते होंगे, 4-5 रीडिंग लेते हैं. तो हम और फाइनली रिजल्ट निकालने के लिए उन सबका क्या ले लेते हैं? मीन ले लेते हैं. तो व्हाई वी विल टेक द मोर देन वन रीडिंग? एक रीडिंग से ज्यादा हम क्यों लेते हैं? टू मिनिमाइज व्हाट टाइप ऑफ एरर?
random error in that experiment. So dear student, today you go through only this part what I have discussed here, and then in the next video I will give you here how many types of the errors takes place, how can we calculate the errors, like this one here, percentage error, fractional error, absolute error, mean absolute error. So these type of the error I will discuss in the next video. Thank you.